आपके पास आप चेक कर लेना। ओके, तो Okay. क्वेश्चन ये है आपके पास कि देयर आर 4 different types of wave given to us and we have to identify the correct statement in this question, right? So इस तरह के Yes. क्वेश्चन में एक बात याद रखना कि डोंट वेस्ट टाइम ऑन आइडेंटिफाइंग द ग्राफ फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट रीड द स्टेटमेंट so you got the idea that what you exactly have to answer in this question। ठीक है, तो हमें पहले स्टेटमेंट Yes. लेनी चाहिए ताकि हमें एक आइडिया हो कि क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट लाइन में भी कुछ नहीं लिखा है ऐसा। ठीक है, और कहीं और भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हमारे पास स्टेटमेंट्स को पढ़ना जरूरी है। हम स्टेटमेंट्स पढ़ के उन्हें क्रॉस और चेक करते जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं, लेट्स सपोज इन फर्स्ट स्टेटमेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव p इज द सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव r। So please check, can you identify the amplitude of point? So this is the amplitude, right? Yes. And what about r? This will be the wavelength. Oh, sorry, amplitude of the point r, right? Yes. So according to this situation, maybe option A will be correct. Let's continue with other option. The amplitude of wave S is double the amplitude of wave Q. So the amplitude of wave S is like this. It will be equal to 1 into, and if we check the amplitude of Q, so the amplitude of Q will be same as of amplitude S, Yes. right? Yes. Okay. So in option C, so in option C, the wavelength of Q is double the wavelength of the wave P. So if we count the wavelength in option Q, so you can clearly see that there is only one crust and one track, right? Yes. And if we count the distance for Q, so 2 units here, 2 units here, it means that the wavelength of both waves are same, right? So B Yes. is not possible, C is not possible। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes. ओके, अब ऑप्शन डी, द वेवलेंथ ऑफ वेव S is the same as the wavelength of wave Q। So if we calculate the wavelength of wave S, so one wave is completing here, it means Q1, and wavelength of Q, which is also one wave is completing here, right? Yes. Also not correct because the wavelength of Q is greater than wavelength of S। ठीक है, क्योंकि हम क्लियरली क्वेश्चन से देख सकते हैं कि Q की वेव बहुत लेंदी है। जितने डिस्टेंस में Q ने वन वेव जनरेट की है, उतने सेम डिस्टेंस में S ने दो जनरेट की है। तो इसका मतलब है वेवलेंथ Q की ग्रेटर है, राइट? Yes. तो हमारे पास ऑप्शन ए ही राइट है। ठीक है, तो अगर आप मेन आइडिया यूज करोगे कि आप स्टेटमेंट्स पहले पढ़ो और पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट थी, तो फाइनल एग्जाम में आपको पता है कि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो जब फर्स्ट वाली क्लियर है आपके पास show कर रही है, आप उसे टिक कर दोगे। Okay. अभी तो एक्सप्लेनेशन है, तो मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका जो डाउट है क्लियर हो कि ऑप्शन सी पता नहीं क्यों नहीं चेक किया हमने, डायरेक्ट ए पे क्यों टिक कर दिया। तो मैंने अभी सारे एक्सप्लेन इसलिए किए ताकि आपकी कंफ्यूजन कोई ना रहे। ठीक है, Yes. लेकिन आपको पता है जब एग्जाम में आप सॉल्व कर रहे हो और आपको पता है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बिल्कुल क्लियरली शो कर रहा है कि वो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आप फौरन उसे टिक कर लोगे। और क्वेश्चन इतना लेंदी है लेकिन उतना ही जल्दी सॉल्व हो गया अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को चेक करते, राइट? Yes. तो एनी कंफ्यूजन? No. ओके, वेरी गुड। लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द लॉन्गिट्यूडनल वेव। कैन यू आइडेंटिफाई द वेव, सॉरी longitudinal wave, example of longitudinal wave? Um.
अच्छा, लेट्स सपोज इन ऑप्शन ए, ठीक है, आप एक सिंगल सिंगल ऑप्शन चेक कर लिया करो, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होगे। दिस इज लाइट वेव्स फ्रॉम अ लैम्प, लाइट इज अ ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल? Transverse. Transverse. So this option is not possible. What about microwaves? Um, These are also electromagnetic waves, invisible waves, also act like light waves. This is also not possible because microwaves are Transverse. micro part of the wave. So this is also transverse. And water waves on a pond, Uh, water waves are Longitudinal. like this. ठीक है, आपको डायग्राम में लग रहा है कि वो स्ट्रेट है, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है कि वाटर वेव्स ऑन अ पॉन्ड, ठीक है, water waves on Yes. a pond are like this, up and down motion. So option C is also showing that this is an example of transverse wave. So the only option remaining is sound waves from a trumpet. As we previously Yes. discussed in our topic that the echoing and sound waves are longitudinal in nature, right? Yes. So option D is the right answer. Okay. Yes. Okay, difficult है या easy है? Easy. ओके, तो 21 तो रिपीट हो गया, ठीक है, इसे स्किप करते हैं। और ये एक तो बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं, और ये सॉल्व किया था आपने? नहीं आप तो नहीं 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 किया था। आता, ठीक है, याद आ गया। ओके, तो नॉट मैनी फ्रॉम दिस पार्ट, ये भी आपने बहुत जल्दी से इसका आंसर दिया था, ये भी मुझे याद है, ये भी सॉल्व कर चुके थे हम, ये भी आप सॉल्व कर चुके थे। So majority questions we already done about the basic concept of longitudinal waves, right? Yes. तो एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, मैं आपको इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस भी सेंड करूंगा। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एज यू कैन see in this paper that many questions are related to the ripple tank, right? Yes. So ripple tank is our main important topic. So if we discuss about the ripple tank, so what actually ripple tank is and what is the main purpose of designing or construction of the ripple tank? तो ripple tank के बारे में कोई बेसिक आइडिया? Uh, Tank with water. Okay, very good. Ripple tank with water, right? So if we discuss about the complete setup of wave or ripple tank, so there is a shallow tank. Let's suppose if we have a tank here, right? Tank is not very deep, tank is shallow, okay? Yes. And secondly, now if we fill this with water, we add some water here, or after adding water into the tank, we usually set a lamp over it and an electric motor, okay? So there is Yes. an electric motor over here. So the purpose of using motor here, that motor can continuously vibrate the water wave, okay, or the water surface, so waves can vibrate continuously, right? Yes. So motor, basic purpose of motor is for vibrations, and
other things that are going to be included in this setup is a light source, right? Yes. There is a bulb which is going to be used for the light. So what is the main purpose of using this bulb? So when waves are going to be generated ripple tank, okay, so the wave form or the wave front are going to be like this, right? Yes. Previously discussed that water waves are transverse in nature. So waves are going to be formed in this shape because we can't draw it in 3D. Okay, so now when waves are going to be generated, so with the help of a bulb, you can clearly see the shadow of the wave on the ground floor, right? Yes. Because glass is transparent, tank is transparent, so you can clearly see the shadow cast by the waves in the ripple tank. Okay, so Yes. can you imagine or identify the shadow of the waves? किस तरह का shadow वहां पर cast होगा? क्योंकि आप देखो कुछ जगह पर waves जो है वो crust है, कुछ जगह पर waves का trough है. तो आपके पास जो Yes. shadow cast होगा, shadow is going to be some in a particular pattern or some specific pattern, right? Yes. So shadow is going to be like this, some bright fringes and some dark fringes, right? Yes. तो कुछ जगह पर हमारे पास ब्राइट लाइट होगी और कुछ जगह पर हमारे पास डार्क लाइट होगी, राइट? सो Yes. डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस आर देयर. सो इफ वी compare these dark and bright fringes, so what actually dark fringes represents? The trough. The trough, okay, because trough is the lower part or the lower part of the wave, so it is connected with the glass wave, so it casts a complete shadow. So dark fringes are Yes. used to trough, okay, Trough. and the bright fringes are used for crust, right? Trust. Yeah. Okay, bright fringes are for crust. So we can say that these are for the crust. Okay, so this is the basic setup of a ripple tank, and you can now conclude that why actually ripple tank is used. Ripple tank is used to basically observe the different properties of waves, right? हमारे पास Yes. रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, रिफ्रैक्शन पॉसिबल है या डायफ्रैक्शन पॉसिबल है. So these are three phenomena which normally happens in waves, any type of wave, either is it sound wave or light wave or water wave, because water waves are also a kind of transverse wave. So there must be reflection, refraction or diffraction going to be produced there. Yes. Main point is that we identify the crust and the trough part of the wave. Now the second and the most important thing in this ripple tank is that the main purpose or the The main shadow. feature, right? So the main purpose of designing this whole setup is to observe or to study Different properties of waves. different properties of waves. To study properties of wave. So we have to study about the three basic properties. First one is reflection. Reflection, refraction, and diffraction. Yes.
reflection, refraction, diffraction, or diffraction, whatever the pronunciation. Okay, diffraction. Okay, this is diffraction, right? Yes. Okay, so these are three basic properties which are related to the reflection, diffraction, and refraction for the properties of wave. Or now, if we want to study all these properties in ripple time, so any confusion in this setup? You want to ask anything? No. Okay. So let's discuss about the reflection of waves and how reflection is going to be produced here. Reflection of waves. तो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कोई ऐसा सरफेस चाहिए होगा, वी नीड सम काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल through which wave can bounce back, or when waves strike to that obstacle or that material, so waves will bounce back, right? Yes. Okay, so now we have to place some kind of obstacle or a piece of a wooden block or a rod in front of a water wave. So let's suppose if waves are going to be travel like this, and we place a wooden rod or a wooden stick in front of this, right? Yes. So this is a wooden stick which we place in front of a water wave. So what will happen next? अब यहाँ पर वेव जब कोलाइड करेगी इस वुडन स्टिक के साथ तो क्या होगा? वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी, राइट? Yes. रिफ्लेक्शन मींस बाउंस बैक होगा यहाँ पर, और बाउंस बैक होने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि आपके पास, अब आपने ये देखना है कि डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, अब डायरेक्शन समझने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट you have to understand the basic principle or the basic phenomena of reflection in wave. So if I give you the basic law regarding the reflection of wave, so the basic phenomena for the law of reflection is law of reflection. In law of reflection, the angle of incidence will be equal to the angle of incidence will be equal to Um, angle of Angle of because we are discussing about the reflection. reflection. Okay, so will be equal to the angle of Yes. reflection, right? Yes. Okay, so now what actually this law defines, or how can we interpret this in our situation? So इसको समझना बहुत जरूरी है कि एंगल्स कहाँ पर जो है हम मार्क करें।
ये एंगल्स वाली बात तो बहुत मुश्किल सी इन्होंने बता दी। सिंपल कुछ हो सकता था तो वो हम कर लेते, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है सुनने में। लेकिन ये बहुत इजी है, क्योंकि अगर आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। वरना डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें बेसिक्स तो पता है कि रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जब चार डायरेक्शंस गिवन होती है तो किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा ये नहीं पता चलता, राइट। सो आपने एक काम Yes. ये करना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल you have to draw a normal line, right? Yes. First of all, you have to draw a normal line, and what this normal line is, you can say that normal line which is perpendicular, To the angle of incidence? no, which is perpendicular to the surface or reflecting surface. No, okay. Okay, so this is our reference line through which we can measure our all incident and reflecting angle. This sign is for perpendicular because I don't like to write too much. So that's why I use this symbol perpendicular sign. तो नाउ इन दिस सिचुएशन अगर हमने यहाँ पर नॉर्मल को ड्रॉ करना है तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ होगा। ये मेरे पास एक वुडन स्टिक है, इसका एंगल मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पर एंड है। तो मुझे इसके परपेंडिकुलर अगर लाइन रखनी हो तो मैं इसके ऊपर एक स्केल रखूंगा जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्रीज होगा, राइट। Yes. So we have to draw a straight line which is in 90-degree angle with this wooden stick. So if we draw that line is going to be like this, right? Yes. So this is our normal. This is our normal wave. Now, according to the law of reflection, the angle of incidence will be equal to the angle of reflection, right? So if waves are moving in this pattern, so our wave is going to be like this, right? So we measure this angle of the wave, right? If we consider these waves as a plane wave, because in 2D we can't imagine the accurate angle of 3D wave. So waves are going to be travel like this, right? As we can Yes. see in the past papers. So this is the angle of incidence, right? We measure the angle of incidence. So wave is going to Yes. be reflect with the same angle. So you can simply draw like this, that wave will reflect in downward direction, right? So this is Yes. angle of reflection. So these both angle will be same. This is angle of incidence and this is angle of reflection, right? Yes. अच्छा, आपने इतना क्लियरली जो है वो और इतना डीपली जो है वो एंगल्स को सॉल्व नहीं करना, ठीक है। आपको Okay. इजी क्लियर समझाने के लिए मैंने इतना डीप एंगल्स को ड्रॉ किया है। हमने तो वहाँ सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। और अगर कहीं पर डायग्राम ड्रॉ करने को Okay. आएगी, ठीक है, मतलब आपको ब्लैंक स्पेस दिया है कि आपने वेव को ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आपकी मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग आपने एटलीस्ट 3 जो है वेव्स को ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब Yes. मैंने अगर यहाँ पे 3 वेव्स को भी ड्रॉ किया, ठीक है, तो मेरा आंसर कंप्लीट है, ठीक है। वो इनकम्प्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा, एटलीस्ट आपके पास 3 वेव्स वहाँ होनी चाहिए, राइट। Okay. Yes. तो एनी कंफ्यूजन इन दिस? No. Okay, very good. So now you can easily identify the direction of reflection after bounce back from a obstacle or some reflecting surface, right? Yes. Okay. तो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, मतलब जिस एंगल से वेव्स हिट करेंगी हमारे ऑब्स्टेकल को, उसी एंगल से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी,
right? So this is the Yes. basic phenomena or the first phenomena of ripple time. तो अब ये हमने देख लिया कि रिफ्लेक्शन इस तरह से होता है, ठीक है। और अगर इसके एक तो क्वेश्चंस हम चेक करते हैं